Okay, we have seen the lipid soluble vitamins and important points from lipid soluble vitamins. So in today's lecture, we are going to see water soluble vitamins. We have seen the lipid soluble vitamins. We have completed all the important points. So we have completed all the vitamins, fat soluble vitamins. So in today's lecture, we are going to start water soluble vitamins. So vitamin C and B complex vitamins, their biochemical role, deficiency disease, etc., etc. Because these are the only few points. So vitamin, their synonyms, then which type of ring is present in the structure of vitamin, then what is the biochemical role of particular vitamin, that is also important. Again, deficiency disorders, and so these points are very important as far as your GPAT Niper is concerned. So we are going to take only those points. So if you want to read in the details, all the details about the vitamins and minerals, you can read from reference book. But most of the points will be covered. Okay, so around 70-80% portion from reference book is already covered in this lecture. Will be covered in this lecture. So there is no need. So if you want a knowledge, if you want to read in the detail, you can read from reference book. So first vitamin, water soluble vitamin is vitamin C. So that is very in news in today. Vitamin C बहुत ही न्यूज में है अभी और उसके बारे में जानेंगे. So vitamin C, what is vitamin C? It is known as a ascorbic acid. First of all, it is a ascorbic acid. Vitamin C is known as ascorbic acid. Okay, and again this vitamin C it is also known as versatile vitamin. It is known as a versatile vitamin because it can cure each and everything. It can cure a disease ranging from your common cold to up to cancer. So हर एक डिसीज में इसका यूज होता है, मतलब कॉमन कोल्ड से लेके आपके कैंसर तक. That's why this is versatile vitamin. And this vitamin C is also known as anti-scurvy vitamin. Remember, anti-scurvy vitamin. Vitamin C is also known as anti-scurvy vitamin, or it is known as a versatile vitamin. Vitamin C is nothing but the ascorbic acid, and it is known as a versatile vitamin. It is an anti-scurvy vitamin because see there was the one disease known as scurvy. इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है. मैं आपको बोलूँगा बाद में कैसे स्कर्वी डिटेक्ट हो गया और कैसे उसमें विटामिन सी का रोल सामने आ गया. ठीक है, प्रेजेंट टाइम जस्ट कीप इन माइंड विटामिन सी इज नथिंग बट द एस्कॉर्बिक एसिड. इट इज अ वर्सटाइल विटामिन. इट इज यूज्ड इन द range of disease ranging from your common cold to cancer. Okay, and it is also known as a anti-scurvy vitamin. Structure of vitamin C. If you see the structure of vitamin C, if you have seen the structure of vitamin C, it will resemble to a monosaccharide. It will resemble to a monosaccharide. जैसे monosaccharide का structure होता है, जैसे ग्लूकोज का structure होता है, वैसे ही जब कुछ वैसी तरीके से उस तरीके से ही विटामिन सी का structure है. मोनोसैकेराइड का जो structure है उस तरीके से विटामिन सी का structure है. उसमें जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जैसे होता है ना आपके इसमें ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और अल्कोहल ग्रुप होता है, टर्मिनल अल्कोहल. सेम स्ट्रक्चर लाइक दैट इज आल्सो इन विटामिन सी. ओके, so you here in case of vitamin C you have different hydroxyl group that is known as the enolic group, and this vitamin C is acidic in nature, and the acidity of vitamin C is because of that enolic hydroxyl group. Okay, and again this vitamin C is a strongly reducing agent. It is a strongly reducing agent. That's why this vitamin C is used as a antioxidant. So vitamin C is used as an antioxidant. That's why, because it is a strong reducing agent. We will see biochemical role. Don't worry. Ascorbic acid or vitamin C, it is having two forms, L ascorbic acid and D ascorbic acid. We have seen what do you mean by L and D. L and D isomer of glucose in comparison with D glyceride structure of glyceride. अगर उसका टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप, अगर टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप और OH ग्रुप सेम साइड पे तो उसको बोलेंगे D, अगर अपोजिट साइड पे तो उसको बोलेंगे L. वैसे ही जैसे आइसोमरिज्म देखा है D and L आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, उसी तरीके से इस एस्कॉर्बिक एसिड का भी D and L आइसोमर्स होता है. ठीक है, सो आउट ऑफ दीज टू आइसोमर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ दीज टू आइसोमर्स L ascorbic acid is active. L ascorbic acid is active. D ascorbic acid is not pharmacologically or biochemically active. So ascorbic acid is vitamin C. It is a versatile vitamin, anti-scurvy vitamin. Okay, it will have a structure similar to the monosaccharide, and the acidity of this ascorbic acid is due to hydroxyl group, enolic hydroxyl group. It is a strong reducing agent, and that's why it is a antioxidant. Okay, L ascorbic acid is an active form, not a D ascorbic acid. Source. What is the source of this vitamin C? So citrus fruits. Whatever the citrus fruits are there, for example, citrus fruit, lemon, then your orange, etc., etc. So all these citrus fruits will consist of vitamin C. It is a rich source of vitamin C. So highest amount of vitamin C is found in amla.
vitamin C is also present in guava, then green vegetable, tomatoes, potatoes, etc. Okay, so this is all about the source. Now we'll see what is the recommended daily allowance. So recommended daily allowance, so you must have to take around 60 to 70 milligram of vitamin C per day. Again, this intake may be increased in case of pregnant woman. What is the biochemical role of this vitamin C? So as I have told, it is a antioxidant. So the biochemical role in the human and other animal, see, it is not biosynthesized in the human and other animals like pigs and bats. So initially when there was evolution, some animals was able to biosynthesize this vitamin C. But as there was a evolution, so humans and animals, they have lost a enzyme required for biosynthesis of vitamin C. So the enzyme required for biosynthesis of vitamin C is nothing but the L-gluconolactone oxidase. So ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स है जैसे पिग है, आपका बैट्स है, पिग है और ह्यूमंस है, उसमें ये एंजाइम नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू बायोसिंथेसाइज दिस विटामिन सी, राइट. सो बाकी के एनिमल में होता है कुछ, फॉर एग्जांपल हॉर्सेस वगैरह में होता है, हॉर्सेस या फिर कैटल हो गए, इसमें होता है. लेकिन ह्यूमंस में बायोसिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम डज नॉट ऑकर बिकॉज ह्यूमंस लैक दिस एंजाइम L-glucolactone oxidase. Remember, right? Function. What is the main biochemical function of this vitamin C? So this vitamin C is required for collagen formation. So what is collagen? Collagen is nothing but it is a fibrous protein present in the bones and hard tissues, right? Hard tissue, bone, skin. So आपका जो भी collagen है, आपका जो भी bones है, bones के formation में collagen लगता है, आपका calcium लगता है, आपका phosphate लगता है, आपका बाकी का ions लगता है. So along with these three, collagen, phosphate, calcium, phosphorus, along with these, vitamin C have a very important role in the formation of bones and collagen. Okay, so collagen formation, that is a post translational modification in the collagen. See, collagen क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है, आपके बॉडी में. जो प्रोटीन कैसे बनता है? ऑब्वियसली आपका प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? आपका ट्रांसलेशन जो होता है प्रोसेस, दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, आपका डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए बनने के लिए उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. और आरएनए बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट. तो जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे अमीनो एसिड उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं एमआरएनए के अकॉर्डिंगली, जैसे कोडिंग होता है एमआरएनए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनने के बाद उसका पहले बनता है प्रोकोलेजन, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोलेजन which is to be modified, which is to be changed in the body. So that changes are nothing but the post translational modification, and that is done by vitamin C. Collagen formation, that is post translation modification of this collagen, is there you require vitamin C, right. Now again, tyrosine metabolism, it is also important for tyrosine metabolism. Vitamin C is also important for tyrosine metabolism. Then again, folic acid metabolism is important. So folic acid के metabolism में भी vitamin C का रोल है. टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं आपके, जैसे इंसुलिन हो गया या फिर बाकी के जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जितने भी हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, गोनेडल हार्मोन्स पर्टिकुलरली, टेस्टोस्टेरोन, आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सो ये सब हार्मोन सिंथेसिस के लिए जो बायोसिंथेसिस होता है हार्मोन्स का, जैसे टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है टेस्टिस में, ह्यूमंस के टेस्टिस में. सो फॉर दैट पर्पस विटामिन सी इज रिक्वायर्ड. सो इट हैज बीन observed that during the puberty, so gonadal organs of humans will have a high concentration of vitamin C. Vitamin C is required for these kind of purposes. Okay, again, corticosteroid hormone synthesis, then synthesis of immunoglobulin. This point is important. Synthesis of immunoglobulin. So vitamin C is important for synthesis of immunoglobulins, and that's why it will increase your immunity. जो immunoglobulins होते हैं आपके बॉडी में, जो immunoglobulins होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं, वो बनाने में क्या करता है? मदद करता है. कौन? विटामिन सी. एंड दैट्स व्हाई जो विटामिन सी का रोल बहुत ही ज्यादा है. आजकल जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, उसमें तो सर्रास बहुत ही ज्यादा विटामिन सी का यूज हो रहा है, क्योंकि दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी, दैट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी, राइट. देन अगेन इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कैटरैक्ट. जो कैटरैक्ट मतलब क्या? देयर इज अ फाइब्रस डिपोजिशन इन योर कॉर्निया. जो आपका आईज होता है, आपके आंखें चले जाएंगे अगर कैटरैक्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी विटामिन सी का रोल है कैटरैक्ट फॉर्मेशन में. हार्ट डिसीज वगैरह जो होता है, कार्डियक डिसीज, ठीक है, उसमें भी उसका रोल है. सो
antioxidant. Vitamin C is an antioxidant, and because of this property, it is used to prevent the disease ranging from your common cold to the cancer. Okay, so it will prevent your formation of cancer, cataract, and coronary heart disease. So that's why vitamin C is very important. There has been a lot of research on vitamin C initially. वहाँ पे क्या होता था पहले ज़माने में, जो ब्रिटिश नेवी होती है, ब्रिटिश नेवी के जो लोग होते हैं वो नेवी में एक बार में समुद्र में उतर गए, मतलब एक बार वे सी में आ गए, तो कम से कम 1 साल 2 साल वो सी में ही रहते नेवी वाले लोग। तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि जो नेवी में काम करते हैं उनको एक डिसीज हो गया जो मिरेकुलस डिसीज है, मतलब उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। ठीक है, तो उनका गम्स वगैरह है, उनका जो गम्स है टीथ गम्स वो फाइब्रस गम हो गया, उसमें लूजनिंग ऑफ टीथ हो गया, वेट लॉस हो गया उनका, ऐसा ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स आया था उस डिसीज में। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश के वहाँ पे जो ब्रिटिश में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने उसको नाम दिया स्कर्वी। तो उसको ट्रीट करने के लिए उस जमाने में वो जो नेवी है वो नेवी में बहुत सारे लेमन्स रखा करते, मतलब टन्स ऑफ लेमन्स दे यूज्ड टू कैरी विद देम, एंड ऑल द क्रू मेंबर्स ऑफ दैट नेवी दे यूज्ड टू ड्रिंक at least 2 times the lemon juice so that there will be a proper supply of vitamin C, right? And from that time vitamin C was evolved, and they have given the name to the disease nothing but the scurvy. It was a history. Lot of research is also going on the vitamin C. So lot of scientists they have proposed different things. कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर आप विटामिन सी का हेवी डोज लेते हो तो आप कैंसर तक को ट्रीट कर सकते हो। कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि आप डेली विटामिन सी का अच्छा सा डोज लेते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, कौन सा भी डिसीज होगा ही नहीं। तो बाद में बहुत सारे रिसर्च कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें बहुत, कोई साइंटिस्ट मानते कि नहीं इतना नहीं लग रहा है, विटामिन सी का डिसीज में कोई रोल नहीं है बट सिर्फ इम्यूनिटी में रोल है। तो ऐसा बहुत सारा रिसर्च है उसके ऊपर, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। सो आवर फोकस इज बीइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर GPAT, राइट? So vitamin C, ascorbic acid, it is a versatile vitamin, anti-scurvy vitamin. Then again, its structure will resemble to monosaccharide. L-ascorbic acid is a active form. That is important for GPAT. ये पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद में क्या? Vitamin C is not synthesized or biosynthesized in the humans. That's why it needs to be supplied from outside, right? So उसमें use क्या है? उसका biochemical role क्या है? So collagen formation, peptide hormone formation, folic acid metabolism, tyrosine metabolism, corticosteroid hormone synthesis, increasing the synthesis of immunoglobulin, prevention of the risk of heart attack, risk of cataract, risk of your cancer. Okay, so that is a biochemical role of vitamin C. Now we'll see what will be the deficiency and toxicity of vitamin C. If there is deficiency of vitamin C, what will be the consequences? So we will see that. So there is a disease known as scurvy. Okay, so deficiency of vitamin C will result in a scurvy that is characterized by spongy and sore gum, loosening of teeth, anemia, swollen joints मतलब अपने घुटने सूज जाएंगे, जो जॉइंट्स होते हैं वो मतलब सूजन आएगी, फ्रजाइल ब्लड वेसल। ठीक है, आपके ब्लड वेसल जो इलास्टिक होने चाहिए आइडियली वो इलास्टिक नहीं होंगे, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी स्कर्वी में। ठीक है, डिक्रीज्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंस मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है, आपके जख्म जल्दी ठीक नहीं होंगे, डिक्रीज इन द फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स बनता है वो डिक्रीज हो जाएगी, हिमोरेज हो जाएगा, आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपके जो बोन्स होते हैं वो बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा वीक हो जाएंगे, वो जल्दी टूटेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? विटामिन सी की डिफिशिएंसी, और विटामिन सी इज इनवॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोन, राइट? दैट्स व्हाई। ठीक है, सो एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी ड्यू टू ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? impaired synthesis of collagen and antioxidant property of vitamin C, right? So it is nothing but the symptoms of scurvy. Now we'll see the structure of vitamin C. See here, you are able to see structure on the screen. Okay, so it will look like a glucose. You see here you have 6 carbon atom. Okay, its structure it is exactly looking similar to a glucose. Okay, so this is a L-ascorbic acid, this is a D-ascorbic acid. Out of these two, L-ascorbic acid is a active form of vitamin C. L-ascorbic acid is a active form. D-ascorbic acid is not a active form. ठीक है, so L-ascorbic acid का
ऑक्सीडेशन होने के बाद, ठीक है, डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। उसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके बाद में फिर से ये डीहाइड्रो डी एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। तो ये बाकी का जो पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर चाहिए तो आप बुक में से पढ़ सकते हो। सो येलो एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्टिव फॉर्म, जस्ट रिमेंबर, ओके। So now next point. Next vitamin is nothing but the thiamine. So next is a B complex vitamin. So B complex vitamin, first member of B complex vitamin is nothing but the thiamine. That is known as a vitamin B1. Vitamin B1 is known as thiamine, or it is also known as anti-beriberi or anti-neuritic factor or anti-neuritic. So it is known as a anti-beriberi factor or anti-neuritic vitamin. Remember. So they have asked the question once on this. So what is that? Which one of the following is anti-neuritic vitamin? So they will give you the option. So you have to answer the vitamin B1, right? So anti-beriberi vitamin, anti-neuritic vitamin. What is the chemistry of this? So in case of thiamine vitamin, it is a water-soluble vitamin, B complex. It belongs to B complex group. Thiamine will have a two-ring structure joined together by methylene bridge. So you will have a pyrimidine ring over here and thiazole ring. Pyrimidine ring and thiazole ring, these two rings will be linked together or held together by methylene bridge. So it will be the chemistry, remember. So they can ask you a question, which ring is present in the thiamine. So they can give you options like isoalexosine, then pyridine, then pyrimidine and thiazole, like that. So you should be able to answer. ठीक है, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा तो आपको आना नहीं था। Now this thiamine is a only natural compound with thiazole ring. जो नेचर में जो थायजोल कंटेनिंग कंपाउंड्स है तो वो सिर्फ थाइमिन है। सो थाइमिन इज द ओनली नेचुरल कंपाउंड व्हिच विल हैव थायजोल रिंग इन द स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियली तो आप बना सकते हो, लेकिन नेचुरली कौन है? थाइमिन है, ठीक है। सो थाइमिन इज द ओनली नेचुरल कंपाउंड विद थायजोल रिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ दिस विटामिन? 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे, ओके। सो मिलीग्राम पर डे, 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे इज द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ओके। ये इतना आपको डेली आपके खाने में होना चाहिए विटामिन। मार्जिनली इट इज इंक्रीज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रंस, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन में क्या होता है, उसके पेट में अलग से एक लाइफ रहती है, उसमें मतलब अलग से बच्चा पल रहा है उसमें पेट में, तो उसमें क्या होता है विटामिन का रिक्वायरमेंट भी जाता है, इट विल बी इंक्रीज्ड, ओके। सो इट विल बी इंक्रीज। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन ए? सो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए इज सीरियल्स, पल्सेस। पल्सेस मीन्स व्हाट? पल्सेस मीन्स आपका जो दाल रहता है, दाल, अरहर की दाल, तूर की दाल, या फिर आपका अरहर की दाल एक्सेट्रा, वो जो दाल रहते हैं पल्सेस। सीरियल्स, सीरियल्स मतलब क्या होता है? सीरियल्स मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह, तो वो सीरियल्स होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। ऑयल सीड्स उसमें नट्स में होता है, ईस्ट में होता है, ओके। सो ये सब सोर्सेज है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड ईस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस? पॉलिशिंग ऑफ राइस विल रिमूव 80% ऑफ विटामिन। जो पुराने जमाने में क्या होता था कि पहले जमाने में जो लोग थे वो बहुत ही स्ट्रांग रहते थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं था, उस टाइम पे चक्कियां आई नहीं थी, उस टाइम पे मिल्स आई नहीं थी डिफरेंट। नाउ व्हाट आर डूइंग? यू आर just harvesting that rice from the field and you are just putting in the mill to remove the outer covering of that rice, okay, outer covering of that rice. So but outer covering of that rice will have thiamine vitamin, okay. So removing of outer covering of rice or polishing of rice will remove 80% of thiamine present in the rice. So whatever rice you are eating today, it is a thiamine less rice. So that's why there is a one more trend nowadays, brown rice. बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मैंने ब्राउन राइस खाया यार, क्योंकि ब्राउन राइस में क्या होता है कि विटामिन ए का विटामिन B1 का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। सो पॉलिशिंग ऑफ राइस विल रिमूव 80% ऑफ विटामिन। ऑल्सो दिस विटामिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फूड लाइक फॉर लिवर, किडनी एंड मिल्क। मतलब जो नॉनवेज है, नॉनवेज फूड है, उसमें मैक्सिमम काइंड के विटामिन रहते हैं। so, सब कुछ तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे विटामिन सिर्फ नॉन वेज में ही, वेज में कुछ नहीं, वेज में भी रहते हैं, लेकिन वेज में कुछ विटामिन बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं। जैसे आपका साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12, वो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द योर वेजिटेबल फूड्स, ओके। सो इफ यू वांट टू गेट ए साइनोकोबालामाइन नेचुरली, देन यू हैव टू ईट द मीट ओनली, मीट, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिवर। So that's why जो पुराने जमाने के लोग जो होते थे वो शिकार करके खाते थे, मतलब जंगल में जाएंगे, हंटिंग करेंगे, हंटिंग करके वो
खाते थे तो उनको कोई डिसीज नहीं होता, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, they are getting carbohydrate, lipid, proteins, all the minerals, all the vitamins, okay, naturally. That's why they were seldomly having any disease. Okay, now what is the biochemical role of this vitamin B1? This vitamin B1 is a very important for various kind of metabolic reactions. Okay, so it is important for the coenzyme of this thymine known as a thymine pyrophosphate. We will see, देखा था वो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी और वो कैसे बनता है वो भी बोलता हूँ, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर B1 is very important for metabolic reactions. Okay, so most of the carbohydrate metabolism, whether it is your glycolysis, whether it is your Krebs cycle, whether it is your HMP shunt, if you see the sequence of steps involved in this reaction, you will find there one coenzyme known as a thymine pyrophosphate. So that metabolic process or that metabolic step is dependent on this coenzyme or this thymine pyrophosphate, and this thymine pyrophosphate is nothing but it is a coenzyme containing thymine pyrophosphate. I will show you, don't worry. Okay, so it is very important in the various biochemical metabolic reactions. Okay, जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, इट इज आल्सो आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, आपका एचएमपी शंट हो गया, तो पूरा 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 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट ऑन दिस thymine pyrophosphate. So mostly associated with कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो आपने देखा होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का जो स्टेप है वो होता है ग्लाइकोलिसिस में. इट इज अ लास्ट स्टेप. ओके, सो आफ्टर द it is a last step. Okay, so you are getting a pyruvate, and pyruvate dehydrogenase will convert this pyruvate into your acetyl CoA, right? So that pyruvate dehydrogenase is dependent on thymine pyrophosphate. Again, alpha ketoglutarate dehydrogenase, it is also a step in the Krebs cycle. Okay, alpha ketoglutarate dehydrogenase, so that enzyme also require this TPP as a cofactor. Then transglutaridase, then branch chain amino acid dehydrogenase. These enzymes also require this thymine pyrophosphate as a cofactor. Now this TPP, that is thymine pyrophosphate, plays an important role in the transmission of nerve impulse. Okay, so nerve impulse जो होता है आपका nervous system intact रहने के लिए आपका thymine बहुत ही important. ठीक है, thymine plays an important role in the transmission of nerve impulse. Thymine antagonist. Now there are thymine antagonists also. So there is one enzyme known as thyminase, which will cause the hydrolysis of thymine. Okay, and that will if there is a that enzyme is present in certain plants like fern plant. आपने देखा होगा 12th में फर्न प्लांट का स्टडी किया होगा, तो वो फर्न प्लांट जो है वो फर्न प्लांट में एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं थाइमिनेज. जो थाइमिनेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है, थाइमिन का जो विटामिन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको हाइड्रोलाइसिस कर देता है, तो थाइमिन का डिफिशिएंसी बन जाता है. सो those cattle who are eating lot of fern plant, और अगर आपने एक्सीडेंटली फन प्लांट का खाया पत्ते या फिर आपने सेवन किया तो आपको पॉइजनिंग होता है, फन पॉइजनिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. क्यों हो रहा है, क्योंकि उस वो जो फन का प्लांट है उसमें क्या है, थाइमिनेज नाम का एंजाइम है. ठीक है, अगेन थाइमिन एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल पायरीथाइमिन एंड ऑक्सीथाइमिन, these are the antagonist of thymine. We will see now the structure of deficiency, disease and toxicity of thymine. So अगर thymine का deficiency होता है तो क्या होगा. So deficiency of thymine or B1 result in the condition known as a beriberi. So there are two types of beriberi, dry beriberi and wet beriberi. So early symptoms of thymine deficiency, there is a loss of appetite, weakness, आपको भूख नहीं लगी, आपको वीक फील होगा, आपको नौशिया होगा, मेंटल डिप्रेशन, peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy is very important and remarkable symptoms of this vitamin deficiency. जो आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, कंडक्शन अच्छा नहीं होगा उसमें, तो आपको मतलब आपके एक्सट्रीमिटी जो है, आपका हाथ हो गया, आप पैर हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपके नर्व्स काम नहीं करेंगे, मतलब आपको सेंसेशन नहीं होगा, या फिर आपका हाथ ऐसा आपको लगेगा कि मेरा हाथ ही नहीं है और मेरा हाथ ही थोड़ा सा वजन बढ़ गया आपका, ऐसा. ठीक है, दैट इज अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी. Okay, there are two kinds of beriberi actually, that is given in the book. If you want to read, you can read Satyanarayana, Biochemistry by Satyanarayana. ठीक है, तो उसमें दिया है two types of beriberi, dry beriberi and wet beriberi. Okay, तो dry beriberi क्या होता है, dry beriberi is also known as cardiovascular beriberi. Dry beriberi is also known as cardiovascular beriberi. Just आपको मालूम होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ.
dry beriberi is known as a cardiovascular beriberi, and wet beriberi is known as a beriberi is known as a juvenile beriberi, or that wet beriberi is found in the children's, or wet beriberi is also known as a nervous beriberi, okay, or neuropathic beriberi. वो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. विटामिन B1 deficiency, the most common vitamin B deficiency is numbness in the legs, complaints of pin and needle sensation. आपको लगेगा कि मेरा पैर ही नहीं, नम मतलब सुन पड़ जाएगा आपको पैर, और आपको ऐसा सेंसेशन होगा कि आपको कोई चुभा रहा है, पिंस एंड नीडल्स. सो numbness in the legs and complaint of pain and needle sensation, that is the most common symptom of your thiamine deficiency. There will be evaluated pyruvate in a urine. क्यों evaluation होगा pyruvate का? You know that thiamine pyrophosphate is a coenzyme involved in the pyruvate dehydrogenase. जो pyruvate dehydrogenase नाम का एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो किसके ऊपर डिपेंड है? थायमिन पायरोफॉस्फेट के ऊपर डिपेंड है, राइट. नाउ थायमिन का डिफिशिएंसी मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट नहीं होगा, इसका मतलब pyruvate dehydrogenase is not able to convert pyruvate into acetyl CoA. So there will be accumulation of pyruvate in the body that will be removed on the urine. So that's why there is evaluation of pyruvate in the urine. Wet beriberi, it is known as a cardiovascular beriberi. Dry beriberi is known as a neurological beriberi. Remember, यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Then again there is one disease known as a Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome, right? Wernicke-Korsakoff syndrome. It is also known as a cerebral beriberi and mostly found in the chronic alcoholics. जो chronic alcoholics होते हैं, जिनको अल्कोहल की लत लग चुकी है, जो बेवड़े पीपल होते हैं, बेवड़े लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें अल्कोहल की वजह से थायमिन का डिफिशिएंसी हो जाता है. थायमिन का डिफिशिएंसी हो जाता है और उनको बोलते हैं सेरिब्रल बेरीबेरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज Wernicke-Korsakoff syndrome. Remember this. You have to remember the names of this. Wernicke-Korsakoff syndrome. It is also known as cerebral beriberi and mostly found in the chronic alcoholics. Right. This is the structure of thiamine. Okay. So what is the chemistry? So thiamine consists of a pyrimidine ring. This is a pyrimidine ring. Right. This is a pyrimidine ring which is attached to a thiazole ring. Okay. This is thiazole. Nitrogen and sulfur. Thiazole. 5 member. Okay. So thiazole ring, pyrimidine ring, they are joined together by methylene bridge. Here is a methylene, methyl CH2. So these two rings are joined together by methylene bridge. Now this is the structure of thymine. Now what is the structure of thymine pyrophosphate? तो आपका यहाँ पे जो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके आगे आपको फॉस्फेट लग जाएगा, इसके आगे आपका फॉस्फेट लग जाएगा PO4, P2O4. ओके, यहाँ पे फॉस्फेट लग जाएगा, उसको बोलेंगे थायमिन पायरोफॉस्फेट. दैट इज अ coenzyme. Okay, that coenzyme is nothing but it is a structure having thymine. Okay, or thymine or vitamin B1. That's why this thymine is very important. Now next vitamin is a niacin or nicotinic acid, or it is also known as a vitamin B3. So B3 is nothing but the niacin. We have seen all the classification in the yesterday's lecture, in the previous lecture. Okay, so this is niacin. Now this is niacin or nicotinic acid, or it is also known as sometimes nicotinamide or vitamin B3. ये सब synonyms है. Now this nicotine or nicotinic acid or niacin, it is a having structural resemblance to a alkaloid nicotine. जो आपके टोबैको में निकोटीन नाम का एक अल्कोलॉइड होता है, उसके जैसे ही होता है वो. ठीक है. तो now this niacin, nicotinic acid or vitamin B3 is known as, and it is known as a pellagra preventive factor of Goldberg. It is known as a pellagra preventive factor of Goldberg, right? It is known as the pellagra preventive factor of Goldberg. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. ठीक है, वो स्टोरी अगर आपको बोलना है तो अभी टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है वो स्टोरी तो वो सत्यनारायण में बुक में एज इट इज दिया है कि उसमें कुछ प्रिजनर्स होते हैं. प्रिजनर्स मतलब कैदी होते हैं. तो कैदी को जो प्रिजनर्स होते हैं उनको एक तरह का फूड सप्लाई किया उन्होंने, सिर्फ एक ही तरह का, मतलब मेज फूड और कॉर्न फूड. जितना भी कॉर्न की वजह से जो कॉर्न फ्लोर है उसकी रोटी, मकई की रोटी दे हमको, या फिर मेज की सब प्रोडक्ट दिए. तो उसमें क्या होगा है, तो मेज में जो निकोटिनिक एसिड होता है, जो नियासिन होता है, उसमें होता है, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में होता है. दैट इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन. वी डोंट हैव एनी एंजाइम दैट विल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑफ नियासिन विद ट्रिप्टोफैन. तो उसमें उन लोगों में क्या होता है, उनमें डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, नियासिन की.
वो प्रिजनर्स में, ठीक है, प्रिजनर्स में डिफिशियंसी हो गई तो उनका जो स्किन है वो मतलब बहुत ही रफ स्किन होता है उनका, उनकी स्किन रफ होता है, वो सिम्टम्स होते हैं इसके पेलेग्रा के, वो बाद में बोलता हूँ मैं, वो सिम्टम्स मिल जाते हैं उनको उस प्रिजनर्स में। ओके, नाउ दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज गोल्डबर्ग। देयर इज वन साइंटिस्ट नोन एज जॉर्ज गोल्डबर्ग। ये इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व कि जो मेज कंटेनिंग फूड है, सिर्फ मेज कंटेनिंग फूड दिया प्रिजनर्स को, उनमें एक डिसीज हो गया जिसका स्किन हो गया उनका रफ स्किन, उसको बोलते हैं पेलेग्रा, और टोड टाइप ऑफ स्किन, उसको बोलते हैं पेलेग्रा। सो फ्रॉम दैट टाइम इट इज नोन एज अ पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। नाउ what is the chemistry of this niacin? So niacin is nothing but the pyridine 3 carboxylic acid. Okay, it has a 3 forms. Okay, now this niacin or nicotinic acid has 3 forms or 3 vitamins. So pyridine 3 carboxylic acid, then its amide form is known as a niacinamide or nicotinamide. Now we'll see the structure of this nicotinic acid. You see, this is a pyridine structure. Pyridine 3 carboxylic acid. Pyridine 3 carboxylic acid it is nothing but the nicotinic acid, right, or niacinamide. Now what is the recommended daily allowance? 50 to 20 milligram per day. You have to take 50 to 20 milligram per day in your diet, this nicotinic acid or niacin. This will be increased in the pregnant woman. अगर pregnant woman है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा recommended daily allowance. So what is the source of this vitamin niacin? Source is nothing but the liver, then yeast. Okay, जो liver होता है, जैसे आप अगर नॉन वेज खाते हो, जो बकरे का मटन खाते हो, बकरे का जो लीवर होता है तो उसमें बहुत सारा विटामिन होता है। आपको एक किस्सा बोलता हूँ, जो जितना भी मतलब आप अपने आप मुझे मालूम नहीं आप जाते हो खाते हो या नहीं खाते हो नॉनवेज, जो भी खाते हो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप वो जो शॉप होता है मटन का शॉप, वहाँ पे जाएंगे आप तो बहुत सारे लोग ये कहते नजर आएंगे आपको कि यार कलेजा डाल। एक्चुअली उनको कलेजा क्या है मालूम नहीं रहता। कलेजा मतलब वो लीवर को बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो तो उनको तो कभी साइंस मालूम नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कलेजा। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादाओं ने, उनके परदादाओं ने उनको बोला है कि कलेजा खाना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द विटामिन दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लिवर। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन द लिवर, दैट्स व्हाई लोग बहुत ही कलेजा खाते हैं। तो सोर्स ऑफ दिस निकोटिनिक एसिड इज नथिंग बट द लिवर एंड यीस्ट। नाउ विल सी 60 milligram of tryptophan is equivalent to 1 milligram niacin for synthesis of niacin coenzyme. तो ये इसका बायोकेमिकल रोल जो है वो नियासिन कोएंजाइम होता है, जैसे NAD निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट NAD और NADPH जो आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में NADPH ADP बनता है। तो NADP is nothing but निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। सो उसका जो कोएंजाइम है कोएंजाइम बनने के लिए ट्रिप्टोफैन भी लगता है। ओके, तो उसमें एक वो आप बाद में बुक में पढ़ लेना। नाउ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ दिस विटामिन B3 niacin. Okay, so various enzymes like nicotinamide adenine dinucleotide NAD and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADPH, they are synthesized from essential amino acids. Okay, that is tryptophan plus this nicotinic acid, they will form a NADPH or NADP. So nicotinamide, niacin and tryptophan ये तीन लगेंगे आपको। इसमें किसके लिए आप करोगे? NAD बनने के लिए, nicotinamide, niacin and tryptophan. So these three will together form a NAD or NADPH. That those will have biochemical role in the various metabolic process, right? This vitamin is having important biochemical function in oxidation reduction reactions. NAD, NADPH, they are nothing but the oxidation reaction. They are involved in the oxidation reduction reactions. This niacin, this is a very important vitamin. Those who are obese, those who are suffering from obesity, those who are suffering from high cholesterol content. So niacin inhibit the lipolysis. Niacin inhibits the lipolysis. They will decrease the triglyceride synthesis in the liver. They will lower down your low density lipoprotein. They will lower down your very low density lipoprotein, and therefore they are used to treat the hyperlipoproteinemia type. मतलब इसका मतलब क्या है कि निकोटिनिक एसिड जो है, निकोटिनामाइड जो है, जो नियासिन है, जो विटामिन B3 है, वो क्या करता है? आपके
लिपोलाइसिस प्रिवेंट करता है आपके बॉडी में। लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। अगर आपके बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड हो गया है तो आपके ब्लड में लिपिड बढ़ जाएगा, तो इट विल प्रिवेंट द लिपोलाइसिस। ये आपका ब्लड का लिपिड लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो आपका जो लो डेंसिटी प्रोटीन है, विच इज elevated level of low density protein, they are associated with the coronary heart disease, right? इसको भी कंट्रोल कर देता है, it will lower down the level of LDL, VLDL, okay? Therefore, this nicotinic acid is used in the hyperlipoproteinemia type 2. ये अगर आपका बॉडी में लिपोप्रोटीन लेवल बढ़ गया है तो उसमें ये ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। कौन सा? नियासिन और विटामिन B3. So they can ask you question on this, which vitamin will reduce your lipid level? So that is nothing but the or anti-lipotropic vitamin, that is nothing but the this niacin. ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, there is no other option. इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे बोला नहीं आपको, ऑलरेडी आ चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेलेग्राफ प्रिवेंटिव फैक्टर, ये इसका भी क्वेश्चन आएगा। तो ये लिपोलाइसिस का एक क्वेश्चन आता है। The deficiency disease and toxicity of this niacin. So deficiency of niacin will result in the pellagra, that is a tough skin. आपकी स्किन बहुत ही टफ हो जाएगी, ओके। सो इन्वॉल्विंग द स्किन ऑफ GIT सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपके GIT में आपका स्किन है जो वो टफ होगा तो उसमें आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा न्यूट्रिशन का, ऑब्वियसली। तो आपको माल न्यूट्रिशन सफर करना पड़ेगा, वेट लॉस होगा, सब होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अगर आपका ये आपने देखा है आपने इसमें कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस है एंजाइम, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस NAD। सो अगर उसमें पायरुवेट जमा हो जाएगा आपके ब्रेन में तो वहाँ पे उसमें कोई मेटाबोलाइज करने वाला सिस्टम नहीं है ब्रेन में। ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर्म, तो उसमें मेटाबोलाइज नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द पेलेग्रा, टफ स्किन इन्वॉल्विंग द स्किन ऑफ GIT एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो यू कैन रिमेंबर द सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा जस्ट बाय one trick known as the 4Ds. 4Ds. So 4Ds are nothing but the four type of Ds. That is a dermatitis, then diarrhea, then dementia and death. So this is the symptoms of pellagra. Dermatitis means inflammation of your skin, dermis. That is known as dermatitis. Diarrhea आपको अच्छी तरह से मालूम है, किसी को हो गया तो फिर क्या होता है आपको मालूम। Dementia मतलब you will lose the memory, okay? Your memory will be lost. Then again death, okay? So deficiency of this vitamin, this niacin leads to pellagra. That is pellagra having 4 symptoms: dermatitis, diarrhea, dementia and death. Then next vitamin, that is a vitamin B6 known as a pyridoxine, okay? So next water soluble vitamin क्या है? pyridoxine. इसको बोलते हैं vitamin B6, right? तो ये एक important है कि आपको एक मैच द फॉलोइंग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या फिर एक साइड पे आपको विटामिन का नाम देंगे, दूसरी साइड पे उसका क्या देंगे? बायोकेमिकल रोल देंगे। एक साइड पे विटामिन का नाम देंगे, उसके साइड दूसरे साइड पे क्या देंगे? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। आपको मैच द फॉलोइंग बोलेंगे, मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो pyridoxine, विटामिन B6, pyridoxine is nothing but the vitamin B6. Now as the name indicates, pyridoxine. So pyri means here you will have pyridine ring, pyridoxine, a pyridine ring will be there. So pyridoxine, vitamin B6. Now what is the structure? You can see here the structure. Pyridine ring is there, okay? So one nitrogen 6 carbon atom ring, that is known as the pyridine ring. Pyridine ring is there, right? So this is the pyridine, this is the pyridoxine. So it is a pyridine derivative. Pyridoxine is a primary alcohol, so it is a pyridoxine structure of pyridoxine is a primary alcohol. ये CH2OH है, ये अल्कोहल है, इसके लिए इसको pyridoxine is a alcohol form, it is a active form, alcohol form is a pyridoxine. Now it is having 3 vitamins. इसमें 3 vitamins होते हैं। मतलब vitamins मतलब क्या है? आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, vitamins are the same structure of vitamin and having same vitamin activity, not equal vitamin activity, but they will have same activity, but not up to same extent. उनका विटामिन का एक्टिविटी एक्सटेंड अलग होगा लेकिन उनका एक्टिविटी सेम होगा थोड़ा सा। सो दैट इज द विटामिन्स। नाउ दिस pyridoxine has 3 vitamins known as the pyridoxine, which is the primary alcohol, then pyridoxal, which is aldehyde form. यहाँ पे अगर CHO आ गया तो वो होगा pyridoxal और pyridoxamine। यहाँ पे अगर NH2 लग गया तो उसको बोलेंगे pyridoxamine. So you will have 3 vitamins of pyridoxine, that is a pyridoxine alcohol, pyridoxine aldehyde and pyridoxine amine. So pyridoxine
then pyridoxal and pyridoxamine. These are the 3 beta bars of vitamin B6. Remember. So what is the recommended daily allowance? So it is nothing but the 2.2 to 2.2 milligram per day. It can be increased in the pregnant woman. Now what is the source of this pyridoxine? So it is found in egg yolk. जो येलो पोर्शन होता है आपका एग का, अगर आप अंडे खाने के शौकीन नहीं, उसमें जो येलो पोर्शन होता है तो उसमें ही सब कुछ होता है. ठीक है. आजकल तो अलग ही ट्रेंड है. आजकल क्या है, बोलते रहते हैं आप क्या करो, सिर्फ व्हाइट खाओ, येलो फेंक के दो, मतलब येलो फेंक दो. क्यों? क्योंकि येलो पोर्शन में क्या होता है, येलो पोर्शन में ज्यादा लिपिड्स होते हैं. अरे लेकिन उसमें विटामिन भी उसमें ही ज्यादा होते हैं. जो येलो पोर्शन होता है उसमें विटामिन होते हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मतलब आपको जैसे कोई हीरो या हीरोइन ने बोल दिया कि ये शैम्पू में प्रो विटामिन ए है, तो आप फटक से उसको बाय करेंगे और लगाएंगे आपके बालों में. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए बायोकेमिकली कि अगर प्रो विटामिन ए बालों में लगा दिया तो वहाँ पे कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो प्रो विटामिन ए को ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल बनाएगा विटामिन का, और वो यूटिलाइज करेंगे अपने बाल. लेकिन ये कौन समझाएगा आपको? ये समझने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एंजाइम? Sorry, what is the source of this vitamin? Pyridoxine, egg yolk, then fish, milk, then meat, wheat, corn, cabbage, root and tubers. आपका जो गोभी है, आपका जो मकई है, आपका जो wheat है, मीट मांस है, उसमें होता है. Okay, what is the biochemical function or biochemical role of this pyridoxine? That is nothing but the coenzymes. Okay, pyridoxal pyrophosphate or pyridoxal phosphate is a coenzyme which participates in the reaction of transamination, deamination, decarboxylation, then transfluorination, then condensation. So various kind of reactions, transamination, deamination, we have seen in the metabolism of proteins and amino acids. So उसमें जो transamination, deamination reaction होते हैं, उसके लिए एक pyridoxal phosphate एक coenzyme लगता है, और वो coenzyme कैसे बनता है? pyridoxine से बनता है. तो जो जितने भी deamination, transfluorination, condensation, decarboxylation, transamination reaction, they will be catalyzed by this coenzyme, which have base of above reactions are involved in the synthesis of biogenic amines. So biogenic amines मतलब क्या होते हैं? biogenic amines आपका एड्रेनालिन हो गया, आपका डोपामाइन हो गया, आपका 5-hydroxytryptamine हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, आपका हिस्टामाइन हो गया. So these are the biogenic amines or neurotransmitter. Okay, so that's why this pyridoxine is very important vitamin. Okay, so if you want to, आपकी बॉडी में अगर ये बायोजेनिक अमाइंस नहीं है तो आपके नर्वस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा. अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके बॉडी में बायोसिंथेसाइज करना है, if you biosynthesis of these neurotransmitters or biogenic amines must be happen in your body, then you must require this vitamin known as a pyridoxine. There we have pyridoxine antagonist, isoniazide, deoxypyridoxine and methoxypyridoxine. So they are the pyridoxine antagonist. Okay, there is one interesting fact over here कि this isoniazide is a anti-tubercular drug. Is used in the tuberculosis. This isoniazide is used in the tuberculosis. और इसमें क्या होता है कि isoniazide का ट्रीटमेंट देने के बाद क्या होता है, वो जो पेशेंट है उसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है. इट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ isoniazide. पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो क्यों होता है? बिकॉज isoniazide is a pyridoxine antagonist and pyridoxine is required for your synthesis of neurotransmitter, normal functioning of nerve, right? तो isoniazide की थेरेपी के बाद क्या होगा, उस पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, तब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? दिस pyridoxine. ओके, सो ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है, ये आपको फिर से आ जाएगा जब एंटी ट्यूबरकुलर टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो उसमें भी ये मैं बोलूंगा आपको कि व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ isoniazide. So isoniazide is an anti-tubercular drug. It will have side effect of peripheral neuropathy because it is a antagonist to the pyridoxine. And to treat that peripheral neuropathy, you have to give pyridoxine, right? Now, deficiency of this pyridoxine and toxicity. Now, deficiency is associated with neurological symptoms. Deficiency is associated with neurological symptoms like डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, मेंटल कंफ्यूजन. सो जो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम होंगे वो होंगे, क्योंकि ये विटामिन क्या है, इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन हो गया, आपका जैसे सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, ये सब बायोजेनिक अमाइन सिंथेसाइज होने के लिए सिंथेसाइज जो अपन जब
adrenergic nervous system, drug acting on adrenergic nervous system. When we will see drug acting on adrenergic nervous system, at that time I will tell you the biosynthesis of adrenaline, dopamine and all that. So during the biosynthesis, we our body require one coenzyme known as this pyridoxal phosphate. Okay, तो उसका रोल है उसमें. Then again, what is the deficiency of this enzyme? Microcytic anemia. Okay, microcytic anemia means your blood cell will be smaller. Reduced heme production. Your hemoglobin will be there, less hemoglobin. They are associated with vitamin B6 deficiency. अगर आपको विटामिन B6 का डेफिशिएंसी होगा तो आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा और आपको ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. ठीक है. नाउ ड्रग इंड्यूस्ड B6 deficiency. As I have already told, isoniazid is a antitubercular drug. It is an antagonist of vitamin B6, that is pyridoxine, and that's why it is a drug-induced vitamin B6 deficiency. वहाँ पे आपको सप्लाई करना पड़ेगा. अगेन पेनिसिलामाइन भी एक है, उसमें भी विटामिन B6 का डेफिशिएंसी होता है. Now next one is a biotin. It is known as a biotin, vitamin B7 or vitamin H. It is also known as vitamin B7 or vitamin H, known as a biotin, right? So what is this biotin? This is having structure like this. Okay, so ये structure है biotin का. उसमें क्या होगा आपका, ये यहाँ पे thiazole ring होगा, यहाँ पे imidazole ring होगा. Okay, so your biotin consists of two rings, thiazole ring and imidazole ring. These two rings are joined together. Okay, so it is a combination of thiazole it is a combination of thiopine and imidazole. Okay, so you will have two rings in the structure, thiopine and imidazole. Then it is a valeric acid. So this side chain is nothing but the valeric acid. So your biotin structure is composed of three elements. Okay, so that is a three elements. Okay, so heterocyclic sulfur containing then it is a heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid formed by fusion of imidazole ring, thiopine ring with valeric acid side chain. Okay, so imidazole ring, thiopine ring, they are joined and with side chain known as valeric acid. Okay, so it is a heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid. So only one vitamin is there which is sulfur containing vitamin. Remember, so biotin is a सल्फर कंटेनिंग विटामिन. ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो. सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? पूरा एक ही है, इसको बोलते हैं बायोटिन. ओके, इसमें सिर्फ सल्फर है, बाकी इसमें सल्फर नहीं है. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस? सो 100 to 300 mg is required daily. Now what is the source of this enzyme, this biotin? So liver, kidney, then eggs, milk, tomatoes and grains. So these are the source of this vitamin. So most of the vitamins, they are present in the non-veg. Biochemical function. So what is biochemical function of this vitamin? So biotin is a coenzyme for transportation of carbon dioxide. Transportation of carbon dioxide for carboxylation reactions. जहाँ भी बायोकेमिकली आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें अगर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराना है आपकी बॉडी को, तो उसको एक कोएंजाइम लगेगा. वो कौन सा है? बायोटिन. बायोटिन का कोएंजाइम है that will carry carbon dioxide for carboxylation reaction. Now coenzyme is involved in the metabolic reaction like gluconeogenesis, citric acid cycle, fatty acid synthesis. Okay, so all these metabolic reactions require this biotin as a coenzyme. Again, antagonist of biotin, which one is the antagonist of biotin? This is a desthiobiotin and biotin sulfonic acid. These two molecules are the antagonist of biotin. So desthiobiotin and biotin sulfonic acid, these are the antagonist of biotin. यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आया तो आपको आना मांगता. Now what is the deficiency of biotin and toxicity? So I want to say here one thing. See, जो भी आपके B complex विटामिन है, B complex जो भी विटामिन है और जो B complex विटामिन है, they are water soluble. ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से उनका टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, कभी होता ही नहीं. मतलब ऐसा नहीं कि आपने 10 कैप्सूल खा लिया विटामिन का तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं. मतलब क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल. ऑल विटामिन आर वाटर सोल्यूबल. आप देखो, आपने अगर विटामिन का गोली खाया
विटामिन का टैबलेट लिया, विटामिन का कैप्सूल लिया और आप यूरिन करने जाओगे तो आपका यूरिन येलो कलर का आएगा. Why? Because all the vitamins which are not required or which are excess in the body, they are removed from water because they are water soluble. So urine से आपको निकल जाएगा. That's why these water soluble vitamins are safe. They are very safe. They are not having any kind of toxicity. Contravention to its fat soluble vitamin. जो fat soluble vitamin होते हैं उनका टॉक्सिटी होता है आपको, लेकिन वाटर सोल्यूबल का नहीं हो सकता क्योंकि वाटर सोल्यूबल मतलब इजीली एक्सक्रीटेड इन द बॉडी. तो आपने जितना लिया, अगर आपके बॉडी को जितना लगता है उतना आपके बॉडी में रहेगा, बाकी का निकल जाएगा. सो डिफिशियंसी ऑफ दिस बायोटिन will result in the anemia, loss of appetite, nausea, dermatitis. Anemia means less hemoglobin content. So now deficiency may result in the depression, hallucination, muscle pain and dermatitis due to biotin. Now next vitamin is nothing but your pantothenic acid, or it is also known as vitamin B5. So just remember all the names of vitamin and their number of vitamin. कौन सा B1 है, कौन सा B2 है, कौन सा B5 है, कौन सा B6 है, ठीक है. So pantothenic acid. Now it is a pantothenic acid. So it is known as anti-chick. It is known as a chick antidermatous factor. It is known as a chick antidermatous factor. It was questioned in GPAT once. Chick antidermatous factor is nothing but the pantothenic acid, or it is also known as a filtrate factor. It is composed of two components, that is pantothenic acid and beta alanine. So it is the structure of this pantothenic acid is composed of two components, pantothenic acid and beta alanine. You can see here the structure. So okay, so beta alanine and pantothenic acid. So it is a beta alanine. Okay, यहाँ पे जो है ये NH2 होता है, यहाँ पे CH2 CO, ये है आपका अमाइन एसिड, यहाँ पे आपका पेंटोनिक एसिड, ये है पेंटोनिक एसिड, ये है अलानिन. ओके, सो इट इज अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, पेंटोनिक एसिड एंड अलानिन, सो दैट इज नोन एज अ पेंटोथेनिक एसिड. दिस इज द विटामिन B5. रिमेंबर, इसमें कौन सा अमाइन एसिड है, किसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए. ये जीपैट को कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको ये भी पूछेंगे कि मैच द लिस्ट ऑफ गिवन विटामिन विद देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक. एक साइड पे आपको विटामिन का नाम देंगे, एक साइड पे स्ट्रक्चर और रिंग का नाम देंगे. मैच द फॉलोइंग. सो बायोकेमिकल फंक्शन. व्हाट इज द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ दिस पेंटोथेनिक एसिड? सो इट इज अगेन coenzyme. It exerts all the biochemical action of pantothenic acid. All the biochemical actions of pantothenic acid exerted by in the form of coenzyme. So ये pantothenic acid coenzyme A के थ्रू ही अपने एक्शन दिखाएगा, जितने भी बायोकेमिकल रोल है उसके. So this coenzyme A is required for acetylation reaction, enzyme of metabolic integration. ठीक है. So coenzyme A is a enzyme of metabolic integration. तो आपने देखा होगा एसिटिल कोए, इधर सेंट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसमें कोएंजाइम ये थे. एसिटिल कोए मतलब क्या है? एसिटिल ग्रुप अटैच्ड विद द कोएंजाइम है. ओके, सो एसिटिल कोए इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल. आप कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में भी एसिटिल कोए देखेंगे, आप लिपिड मॉलिक्यूल में मेटाबॉलिज्म में भी एसिटिल कोए देखेंगे, आप प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी एसिटिल कोए देखेंगे, बिकॉज एसिटिल कोए इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल फॉर मेटाबॉलिज्म. सो दैट्स व्हाई. एंड this coenzyme is nothing but it is formed by pantothenic acid. Now it will serve as a carrier for acetylated or acyl groups. We have seen in the metabolism of lipids, acyl CoA. Now deficiency of this vitamin or pantothenic acid will lead to, so most of the time deficiency will not occur because it is sufficiently supplied in the diet. But if seldomly कभी-कभी deficiency हो जाता है तो कैसे होगा, क्या होगा? So you will feel a burning, you will have a burning feet syndrome. पैर में आपको जलन हो जाएगी. That is nothing but the pantothenic acid deficiency. So what is recommended dietary allowance of this pantothenic acid? That is nothing but the 5 to 10 milligram per day. It is found in eggs, liver, meat, yeast, milk and milk. They are good source of vitamin or pantothenic acid. Is that clear? Next one vitamin is a folic acid. It is very important. It is composed of 3 components. Okay? The structure of folic acid is composed of 3 components. Pteridine ring, then para-benzoic acid, then glutamic acid. Pteridine ring, or you can call it as a pyridine ring. Pyridine or P silent. Pteridine ring, then amino-benzoic acid, then glutamic acid. You can see in the structure I will show you.
So active form of this folic acid is nothing but the tetrahydrofolic acid, which is converted by tetrahydrofolate reductase in the body. Okay, ये folic acid जब body में लेंगे आप उसको, उसका tetrahydrofolic acid बन जाएगा, ठीक है, body में, which is the active form of folic acid. Recommended dietary allowance of this folic acid is 200 microgram, and it can be increased in the pregnant woman. And what is the source of this folic acid? This folic acid is found in green leafy vegetables, whole grains, cereals, liver, kidney, yeast, and eggs. Now this is the structure of folic acid. You can see here is three components. So pyridine ring. Pyridine ring is where this is the pyridine ring. This is the pyridine ring. Now para-aminobenzoic acid. This is the para-aminobenzoic acid. Now what is the third part? Glutamic acid. Now this is the glutamic acid. So it is a structure composed of three components: pyridine, then para-aminobenzoic acid, and glutamic acid. Okay. So I have seen this is pyridine ring. This is the para-aminobenzoic acid, and this is the glutamic acid. Now what is the biochemical role of this folic acid? So tetrahydrofolate, that is THF, they will act as a coenzyme involved in the 1 carbon metabolism. Tetrahydrofolic acid is involved in the 1 carbon atom metabolism. It will act as a donor and acceptor for the methyl group formyl. It will act as a acceptor and donor for methyl group formyl group. Then tetrahydrofolate is known as the folinic acid or citrovorum factor. Remember, एक बार पूछा था क्वेश्चन, citrovorum factor. सबको किसी को मालूम नहीं था citrovorum factor क्या है? It is nothing but the folinic acid or tetrahydrofolate. आपको अगर सल्फर ड्रग्स के बारे में मालूम होगा, so antibacterial sulfonamides, they will act on this folic acid synthesis of bacteria. So folic acid synthesis of bacteria will be inhibited by sulfonamides. Now folic acid deficiency present in folic acid deficiency is present in hypercystinemia. We have seen this. Okay, so when we were seeing metabolism of amino acid, defect of metabolism of amino acid, we have seen this hyperhomocystinemia. We have seen this. In this case, there is deficiency of folic acid, because that folic acid is involved in the metabolism of cysteine amino acid. Now this hyperhomocystinemia is also associated with the coronary heart disease and arteriosclerosis. So this was all about the folic acid. They can ask you other structure, they can ask you the synonyms, okay, or they can ask you the biochemical role. Now deficiency. What will be the deficiency of this folic acid? अगर उसका deficiency होता है तो क्या होगा? So most common vitamin deficiency. ये most common vitamin deficiency है. बहुत सारे लोगों में इसका deficiency होता है, ठीक है? Folic acid का. Mainly in the pregnant woman. So mostly occurs in the pregnant woman. जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं उसमें फोलिक एसिड का डिफिशिएंसी होता है. दैट्स व्हाई जो जिसका प्रेगनेंसी है उसको कभी भी आयरन प्लस फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमन है, आपका भाई बहन, आपका कोई भी होगा, उनको आयरन प्लस फोलिक एसिड का टैबलेट कंपलसरी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं. बिकॉज डिफिशिएंसी ऑफ दिस फोलिक एसिड रिजल्ट इन वन डिसीज नोन एज अ न्यूरल ट्यूब डिसीज. वी विल डिस्कस इट. न्यूरल ट्यूब डिसीज, अगर वो विटामिन ये फोलिक एसिड का डिफिशिएंसी अगर है तो बच्चों में क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा. डिफिशिएंसी इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन रिजल्ट इन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द fetus. ठीक है, ये अभी. देन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस इन द बोन मैरो. माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक चेंज इन द बोन मैरो, दे आर द फीचर ऑफ फोलिक डिफिशिएंसी. मतलब आपका जो बोन मैरो में ब्लड सेल्स बन रहा है नॉर्मल नहीं बनेगा. व्हाट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ दिस फोलिक एसिड? Sulfur drugs, trimethoprim, aminoterine, then methotrexate. Methotrexate is an anti-cancer drug. It is also folate antagonist. And sulfur drug is an antibacterial. Trimethoprim is an antibacterial. They will prevent the formation of folic acid in the bacteria, and they will act as an antibacterial. I don't know about this aminoterine. Again, next vitamin is nothing but the cyanocobalamin. And this is a very important vitamin. This is the only vitamin containing cobalt atom. Okay, only vitamin containing cobalt atom. Only vitamin containing sulfur atom is nothing but the biotine. Okay, only vitamin containing cobalt atom is nothing but the cyanocobalamin. Cyanocobalamin is nothing but the vitamin B12. Now it is a anti-pernicious anemia vitamin. Okay, so deficiency of vitamin B12 result in the pernicious anemia. It was question in GPAT again. Yeah, I think GPAT 2019 में था.
pernicious anemia is due to the deficiency of vitamin B12. Okay, so anti-pernicious anemia vitamin, and this is only synthesized in the microorganism. It is not synthesized in any animal or any plant. ठीक है, so ये एक विटामिन है साइनोकोबालामाइन. ये साइनोकोबालामाइन विटामिन ना इसमें प्लांट में भी नहीं होता और एनिमल्स में भी नहीं होता. ये सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया से. नाउ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट विल हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर नहीं शो किया मैंने, लेकिन वो बहुत ही मतलब सेंट्रल आइटम है. उसमें प्रोफायरिन रिंग्स होते हैं बहुत सारे. ओके, सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, it consists of choline ring with central cobalt atom. Last vitamin to be discovered. It was the last vitamin which was discovered. ठीक है, लास्ट विटामिन था, इसके बाद कोई विटामिन आया ही नहीं. So what is the recommended dietary allowance? Dietary allowance, that is a 3 to 4 microgram per day. Okay? So all recommended dietary allowance are nothing but the per day. So 3 to 4 microgram per day. Sources: it is found in the liver, kidney, meat, curd, egg, fish, chicken, curd. They are synthesized by lactobacillus also. That is synthesized in the microorganism. So you can find this vitamin in the liver, kidney, milk, curd. तो आप बोलेंगे अगर ये एनिमल्स में सिंथेसाइज नहीं होता तो ये कैसा है, लिवर में, किडनी में कैसा है, कर्ड में कैसा है. तो जो एनिमल्स है वो सब खाते हैं, बाकी सब उनके भी गट में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. वो गट में भी आपका फर्मेंटेशन होते ही रहता है, तो उसमें विटामिन B12 बनते रहता है. तो अगर आपको विटामिन B12 मतलब ये सिर्फ एनिमल सोर्स है. एनिमल का जो चिकन मटन जो खाते हैं, लिवर किडनी उसमें ही होता है, या फिर आपको डायरेक्टली साइनोकोबालामाइन का इंजेक्शन लगता है, बाकी इसमें है ही नहीं. नाउ व्हाट इज द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ दिस विटामिन? सो इंट्रिंसिक फैक्टर, देयर इज वन फैक्टर व्हिच इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर, which is very important for absorption of vitamin B12 from the stomach. Okay, आपके स्टमक में जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, so when we will see a digestive system, we will see the content of gastric juice. So in that juice there is one glycoprotein known as a intrinsic factor, which is very important for absorption of vitamin B12. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर absorption वहाँ पे आपके नहीं रहेगा आपके स्टमक के जूस में, तो आपका विटामिन B12 आपका एब्सॉर्प्शन होगा ही नहीं स्टमक में से. यहाँ पे याद रखो, ये क्वेश्चन आया था, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, राइट. सिंथेसिस ऑफ मेथिओनिन फ्रॉम होमोसिस्टीन, आइसोमराइजेशन ऑफ मिथाइल मैलियल CoA to succinyl. So this vitamin B12 is important for this metabolic process. Now deficiency and toxicity of with this vitamin. So deficiency will result in the pernicious anemia. Okay, anemia means आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. Pernicious anemia characterized by low hemoglobin level and neurological manifestation. Because this साइनोकोबालामाइन is very important for nervous system also. So इसका deficiency अगर हो तो neurological problem manifest, मतलब जो भी आपका पैरालिसिस वगैरह जो होता है उसमें ये विटामिन B12 का एडवाइस किया जाता है. Deficiency is associated with neuronal degradation. आपका नर्वस सिस्टम का डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा. डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, देयर इज वन कवरिंग ओवर द न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर आप, न्यूरॉन मतलब क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन जो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं माइलिन शेथ. तो माइलिन शेथ जो होता है उसमें फॉस्फोलिपिड होता है. ठीक है, तो सो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज एसोसिएटेड विद डीमाइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. और विटामिन B12 नहीं है तो माइलिन का शीट जो है वो नहीं रहेगा आपके न्यूरॉन के ऊपर, और आपको क्या होगा, डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, आपको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर.